तो हेलो गाइस, आज का चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्ज़ाम में, मतलब दूसरा यूनिवर्सिटी स्टेट का है क्वेश्चन। तो सभी तो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द रेस्पिरेटरी सेंटर इन ह्यूमन ब्रेन इज लोकेटेड इन which part? The respiratory center in human brain is located in which part? Cerebellum, hypothalamus, medulla oblongata, spinal cord. Option C is correct, medulla oblongata. The respiratory center in human brain is located in medulla oblongata. Next question is, how much percent of air is expired? How much percent of air is expired? Option B is correct, 32%. जब हम लोग मतलब when we exhale तो 32% ऑफ द ऑक्सीजन मतलब हम लोग ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन को, एंड रिमेनिंग जो ऑक्सीजन बचता है वो सब ऑब्जर्व कर लेता है। तो क्वेश्चन इज हाउ मच परसेंट ऑफ एयर इज एक्सपायर्ड? हाउ मच परसेंट ऑफ एयर इज एक्सपायर्ड? 7%, 32%, 32%, 32% ऑफ द ऑक्सीजन वी मतलब ओरिजिनली ब्रीद इन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the instrument that helps in the clinical assessment of pulmonary function is sphygmomanometer, emitter, barometer, and spirometer. So option D is correct, spirometer. The instrument that helps in the clinical assessment of pulmonary function. Option D is correct, spirometer. Next question is the volume of air. Volume of air inspired or expired during normal breathing is. The volume of air inspired or expired during normal breathing is residual volume, expiratory reserve volume, tidal volume, inspiratory reserve volume. The option C is correct, tidal volume. The volume of air inspired or expired during normal breathing is tidal volume. Next question is Adam's apple represents thyroid cartilage of larynx, cricoid of larynx, and arytenoid cartilage of larynx, all of these. So option A is correct. Adam's apple represents thyroid cartilage of larynx. Next question is covering of the lungs is called. lungs को कवर को क्या बोला जाता है? तो पेरिकार्डियम, प्लूरिया, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिटोनियम. Option B is correct, pleuria. Covering of the lungs is called pleuria. Yeah, pleura. Next question is, in our body, ciliated epithelium is found in. In our body, ciliated epithelium is found in ureter, eustachian tube, vagina, trachea. Option D is correct. Ciliated epithelium is found in trachea. Next question is, right lungs is made up of. Right lungs is made up of. Option B is correct, 3 lobes. So right lungs is made up of 3 lobes. Upper lobes, middle lobes, and lower lobes. Next question is, the lungs are protected by. Lungs are protected by sternum, rib cage. So rib cage, backbone, peritoneum, rib cage होगा. Option B is correct. Lungs are protected by rib cage or ribs. Next question is, which of the following is true about cricoid cartilage? Cricoid cartilage acts as lead if the larynx is linked to box. B. Leaf-shaped cartilage attached to posterior wall of the larynx, shaped like a signet ring completely encircling the larynx, has 2 pyramid-shaped cartilages situated on top broad part of the cartilage. So option C is correct, is true about cricoid cartilage. Cricoid cartilage shaped like or signet ring completely encircling the larynx. Next question is upper respiratory tract. Upper respiratory tract
इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ये ऑप्शन में दिया हुआ कौन सा इंक्लूड है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में? ट्रेकिया, प्राइमरी, ब्रोंकाई, लांस, नेजल पैसेजेस, लांस, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, लांस, नेजल पैसेजेस, फेरिंग्स, लेरिंग्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट includes nasal passages, pharynx and larynx. Next question is ciliated epithelial cells. Ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in bile duct of bronchioles, fallopian tubes of pancreatic duct, eustachian tube and salivary duct, bronchioles and fallopian tubes. Option D is correct. Bronchioles and fallopian tubes. The ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in bronchioles and fallopian tubes. Next question is tidal volume. Tidal volume and excretory reserve volume. तो दोनों का एथलेटी 500 ml 1000 ml दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। तो पूछा है व्हाट विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ऑफ ए रेसिडुअल वॉल्यूम इज 12 मिलीलीटर। तो बोला है व्हाट विल बी द एक्सक्रीटरी कैपेसिटी। एक्सक्रीटरी कैपेसिटी होगा इफ़ द रेसिडुअल वॉल्यूम 1200। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है एक्सक्रीटरी कैपेसिटी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ है 500 एंड ERB एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया हुआ है 1000। इसको अगर प्लस करेंगे तो आएगा 1500। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम is 1500. Next question is respiratory quotient of fats is respiratory quotient of fats is 1, less than 1, more than 1, 0. So option B is correct, less than 1. Respiratory quotient of fats is less than 1. Next question is oxyhemoglobin is broken down. High oxygen, low PO2 in tissues, equal PO2 and all times. Option B is correct. Oxyhemoglobin is broken down into oxygen and hemoglobin and oxygen, and option B is correct. Low PO2 pressure of oxygen, partial pressure of oxygen low, partial pressure of oxygen in tissues. Option B is correct. Next question is the outer membrane of lungs is called. outer membrane of lungs को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, प्लूरा, एपिथेलियल. Option C is correct. Pleura. Outer membrane of lungs is called pleura. Next question is exchange of gases takes place in kidney, lungs, liver, heart. So option B is correct. Lungs. Exchange of gases takes place in lungs. Next question is unburnt carbon particles cause stomach infections, respiratory problems, brain infection, throat problems. So option B is correct. Respiratory problems. Unburnt carbon particles cause respiratory problems. Next question is chronic disorder affecting lungs in which alveolar walls are damaged is. Chronic disorder affecting lungs in which alveolar walls damage is. Asthma, emphysema, fibrosis, none of these. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. एम्फीसेमा जो है ये क्रोनिक लंग्स डिजीज है हायर एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. ऑप्शन दिया हुआ है IC, FRC, BC, TLC. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, FRC. नेक्स्ट क्वेश्चन इज volume of air inspired or expired during normal respiration is known as vital capacity, total lungs capacity, tidal volume, residual volume.
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टाइडल वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम. Next question is, if respiratory quotient is 1, RQ is 1, then which is used as a respiratory substrate? Option दिया हुआ है, proteins, carbohydrates, lipid, tripalmitin. Option B is correct. If a respiratory quotient is 1, then which is used as a respiratory substrate? Carbohydrates. तो ये था टोटल 23 क्वेश्चन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर से. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट और एक वीडियो में मिलते हैं.